the very top of the picture, okay, what you see is something in brown, a signaling cell. It's mentioned as a signaling cell, if you can see at the very top. Okay, so this is about the cell which actually produces extracellular messenger. Okay, so let's say that one cell wants to, sort of communicate with the another one. So the one which is deciding about communicating it is the signaling cell, and it is producing the extracellular messenger. So if you see there, some numbers have been put forward in the picture, 1, 2, 3, 4, and so on. So they are nothing but steps involved in the process of cell signaling. So let me go by in a stepwise manner. So the very first one that is mentioned there, okay, 1, wherein I have mentioned it is extracellular signaling molecule. So what you understand by this is the cell which decides to communicate with another cell, it has to first synthesize a cell signaling molecule, which is nothing but an extracellular messenger. Okay, because why it is called as extracellular messenger? Because it is synthesized and it is released into the extracellular space. After getting released into the extracellular space, it will interact with the receptor of another cell and pass on the signal to that particular cell. That is why it is referred as extracellular messenger. It can also be called as a ligand. Okay, extracellular messengers can also be called as ligand. Please understand this. Okay, so extracellular signaling molecule is also called as ligand, and it is also called as first messenger because it is the very first fellow who is going to transmit the signal. That is why it is also called as first messenger. Okay, so the cell that is synthesizing the extracellular messenger is called as the signaling cell, and the molecule that is released, okay, for cell signaling into the extracellular space, that molecule is called as the extracellular signal molecule or extracellular messenger, or also called as ligand, or also called as first messenger. Okay, so I believe you all are noting down these things what I'm just mentioning. So extracellular molecule, it is called as extracellular signaling molecule, or also called as ligand, or also called as first messenger. Now, this molecule is of very importance here because this is the one fellow who is going to transmit the signal further to the other cell. So what it does, it is released into the extracellular space. Once it is released into the extracellular space, the other cell which needs to interact with this particular messenger, okay, the other cell which needs to interact with this particular messenger should have a receptor, should have a appropriate receptor for this extracellular messenger. Okay, तो जो भी extracellular messenger रिलीज किया जा रहा है वो extracellular messenger को बाइंड करने के लिए एक प्रॉपर रिसेप्टर होना चाहिए दूसरे सेल के पास. Okay, so first cell is transmitting signal to second cell. Second cell should have a proper receptor which is having affinity for the extracellular messenger and it can bind to it. Okay, so this is one of the necessity. Then only the signaling can happen. So on one side you have extracellular messenger which is created by the first cell. On second cell you have a receptor which is going to bind to that particular messenger. Okay. Now, most often these receptors are nothing but transmembrane receptor. I think in my previous lectures, I had mentioned to you all that integral membrane proteins which are present in your cell membrane, okay, they can act as receptors at times. Okay, there can be carriers, there can be transporters, there can be your receptors. All of them are generally nothing but transmembrane proteins of your cell membrane. So same way, if you can see here a blue colored section, okay, a blue colored section, that is nothing but your cell membrane. So what you see this region, blue colored patch, sorry. Yeah, what you see here, the blue colored patch, okay, is nothing but your cell membrane. And what you see these two sections which is embedded into that membrane is nothing but the receptor. Okay, so the second cell should have this receptor and the first cell should be able to produce the messenger. Now, the receptor should have high affinity for the particular messenger. Only then the interaction can happen, and only if the interaction happens, then only the signal can be further transmitted to the cell interior. So what you see this blue patch, this is the upper region of the blue patch is nothing but the extracellular space, matlab outside the cell membrane. And what you see beneath that particular blue region is your intracellular space.
So my cursor is indicating this. This region is my intracellular space, and the upper region, this region is the extracellular space. Okay, so extracellular messenger, just a minute, just a minute. Yes. Sorry for the interruption. So as you can see here, the extracellular messenger, it binds to the receptor. Okay, so receptor is present on the second cell, and extracellular messenger is released by the first cell. Okay, and the receptor is present on the cell membrane of the second cell. So the extracellular messenger can pair up with the receptor which is present on the second cell, and further the signal can be transmitted to the cell interior. I already told that the region above the blue region, what you see here, is called as the extracellular space, and the below region is nothing but the intracellular space, matlab internal of the cell. Okay, so as I explained, the very first step is to produce an extracellular messenger, and second step is to have a receptor, okay, which has got high affinity for the extracellular messenger. So extracellular messenger comes and binds to the receptor. Okay, it will come and it will bind to the receptor. Once your messenger binds the receptor, your receptor gets activated. Please understand that when we talk about receptors, receptors are nothing but proteins. They are transmembrane proteins. And since they are transmembrane proteins, okay, and we all know that proteins are maintained because of their three-dimensional structure. And in case if you do any changes to the structure of the protein, their function also slightly undergoes a change. You all know about how enzymes work. Okay, you all know about various kind of carrier proteins and transporters, which you all have learned in your last year syllabus. Okay, so same way here, this receptor also behaves in the same manner. Okay, when it binds the extracellular messenger, the receptor undergoes a conformational change because it has got a three-dimensional structure. It has got either your alpha helix structure inside it or a beta pleated structure. So when your messenger binds to it, it brings about a slight change in the conformation of that protein. And when the conformation changes, the receptor gets activated. Understand, the receptor gets activated. So initially, when there was no messenger binding to the receptor, at that time, the receptor was inactive. ओके तो पहला रिसेप्टर इनएक्टिव था क्योंकि उसको सिग्नल मिला नहीं था, उसने मैसेंजर को बाइंड नहीं किया था. बट द टाइम व्हेन द मैसेंजर बाइंड्स द रिसेप्टर, व्हाट हैपेंस, द रिसेप्टर अंडरगोज अ change, a conformational change, wherein due to the conformational change, the receptor now becomes active. And you all should know it's a transmembrane protein. So when we talk about a transmembrane protein, when the messenger is binding the extracellular region of the receptor. So receptor, if you see receptor has got two domains. If you see, there is one extracellular domain and another is called as the intracellular domain. Please look at the cursor to understand this. This region is called as the extracellular domain of the receptor, where your extracellular messenger can bind. And the lower region, which is inside the cytoplasm, is called as the cytoplasmic domain. Okay? So entire receptor is embedded in the cell membrane. Upper region of the receptor, which is facing extracellular space, is called as extracellular domain. And the region which is facing the cytoplasm is called as the cytoplasmic domain. So extracellular messenger binds to the extracellular domain of the receptor. When it binds to the extracellular domain of the receptor, receptor undergoes a conformational change. Due to the conformational change, the cytoplasmic domain now becomes activated. Understand? Initially, receptor was inactive. When extracellular messenger binds to the receptor on the extracellular domain, what happens? It undergoes a conformational change, and due to the conformational change, what is happening? The internal part, that is the cytoplasmic domain of the receptor, now becomes active. Okay, so all
begins with the first cell which produced the extracellular messenger. Extracellular messenger went to the receptor of the second cell. It binds with the extracellular domain of the receptor. Once it binds to it, receptor undergoes a conformational change, and due to the conformational change, the cytoplasmic domain of the receptor now gets activated. Once the cytoplasmic domain is activated, it has two routes. There are two possible routes to carry out the signaling further. Okay, so here we have now two routes that is possible. Till now everything was in a single route. Okay, understand that messenger है, messenger से receptor पे आया, रिसेप्टर को बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक डोमेन अभी एक्टिवेट हुआ, इधर तक प्रोसेस सिमिलर है. ओके, नाउ इसके बाद दो रूट पॉसिबल है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आर दोस टू रूट्स एंड हाउ दे वर्क. Okay, so I believe step number 1 and step number 2 is clear with you all. Now we come to step 3. In step 3, what is happening? In step 3, the cytoplasmic domain which was activated, okay, now can have two routes. In the first route, I'm talking about the first route. In the first route, what is happening? Okay, it is interacting with a nearby enzyme which is called as effector. Okay, please look at the cursor. If you see, this is the cytoplasmic domain of your receptor. Cytoplasmic domain interacts with effector. It interacts with effector, and effector क्या है? Effector is an enzyme which is attached to the cell membrane. ठीक है, तो रिसेप्टर तो सेल मेम्ब्रेन में है, रिसेप्टर के बाजू में एक एंजाइम है जो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है. जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेटेड होगा. जब साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिव है तो वो क्या करेगा? एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये एंजाइम का नाम क्या है? इफेक्टर. वी हैव गिवन द नेम एज इफेक्टर. So receptor, once it is activated, the cytoplasmic domain of the receptor can interact with an enzyme called as effector. Now this enzyme is very important. This enzyme is capable of working on a substrate to generate something called as a second messenger. Okay, this effector, which is an enzyme, it is responsible for working on a substrate and converting it into a molecule which is called as a second messenger. So here the substrate is not shown. If you look at the step number 3, step number 3 was interaction of cytoplasmic domain with the enzyme, that is effector. Then step number 4, okay, in 4 what is happening? The effector attacks a substrate because it is an enzyme, and it converts that substrate into second messenger, into a molecule which is called as second messenger. Okay, I believe things are clear till now. Okay, so in one route what is happening? The extracellular messenger, it came, it binds to receptor, receptor gets activated, cytoplasmic domain gets activated, cytoplasmic domain then interacts with a nearby enzyme which is called as the effector, and effector then converts a substrate into a product, and the product is second messenger. Now this second messenger, it is called as second messenger because this fellow is going to transmit the signal further in the cell interior. So if you can see lot many arrows down the way, okay, it is passing that signal to various proteins until it goes into the nucleus or the target region wherever a particular response is to be achieved from. So if you see this route, okay, what you understand is this is one of the important messenger molecule which is generated inside the cell, and since it is second in the series, if you start with extracellular messenger जो पहला बना था वो फर्स्ट मैसेंजर था जिसने सिग्नल्स को पास किया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने फिर इफेक्टर को दिया, इफेक्टर ने फिर सेकंड मैसेंजर को जनरेट किया. तो बाहर की तरफ जो फर्स्ट ट्रांसमिशन सिग्नल का किया उसको हम लोग ने एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोला, या फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर बोला, या फिर फर्स्ट मैसेंजर. और इफेक्टर के थ्रू जनरेट होने वाला जो मैसेंजर है जो कि सेल के अंदर काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड मैसेंजर. वी विल कॉल इट एज सेकंड मैसेंजर. ओके, so I believe steps are clear till now. So this is one route. I am discussing one of the route for carrying out this. So in the first route, what is happening? The cytoplasmic domain which is activated, it interacts with a nearby enzyme which is called as effector, and the enzyme generates, okay, a second messenger. Now the second messenger is very important. Okay, the second messenger can diffuse through the cell membrane, okay,
or it can be really it can directly interact with other proteins also. Okay, that means it can get it can enter into various organelles, okay, and help in bringing out some response from that region. So that is also possible. So second messengers, there are several examples. There can be your calcium ions can act as second messenger. You can have CAMP, cyclic adenosine monophosphate, which can act as a second messenger. Then IP3, inositol triphosphate, it can act as a second messenger. So likewise, there are various kind of second messengers available. Okay, we will discuss that in detail when we take up one example in description in the coming lectures. Okay, so as of now, it is a generalized pathway. Please understand this pathway very well, because once you understand this pathway very well, you can take up each example like GPCR or receptor tyrosine kinase and study that entire pathway easily if you understand this generalized pathway very well. So in this generalized pathway, in the first route, I just mentioned that cytoplasmic domain interacts with effector. Effector helps in generation of second messenger, and second messenger then starts interacting with subsequent cell signaling proteins. Okay, it will start interacting with subsequent cell signaling proteins. I already told in my previous lectures that inside the cell, it is a series that happens. One fellow giving signal to second fellow giving it to third fellow, third to fourth, fourth to fifth, and so on. Okay, depending upon what kind of a target cell or what kind of a target region is to be, activated. Depending upon that, you can have different number of cell signaling proteins which helps in transmission of the signal. And this is why it is called as a cascade or signal transduction cascade. So if you look at the picture, you can clearly see the arrows starting from the signaling cell at the top, from there to extracellular messenger, to receptor, to effector, to second messenger, and further to various cell signaling protein until it reaches a target site. Okay, so that is why it is referred as a signal transduction cascade, because it is a series of proteins involved in the process of transmission of signal. Okay, so here your second messengers, they can now interact with cell signaling protein. Once they interact with cell signaling protein, what happens? तो पहला अगर ऊपर से अगर देखा गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ने सिग्नल को पास किया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने सिग्नल को पास किया खुद का साइटोप्लाज्मिक डोमेन में, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गया. साइटोप्लाज्मिक डोमेन ने वो सिग्नल दिया इफेक्टर को, इफेक्टर ने सेकेंड मैसेंजर जनरेट किया, जिसके वजह से सेकेंड मैसेंजर के पास अभी सेल सिग्नल है. सेकेंड मैसेंजर वो सिग्नल अभी आगे के सेल सिग्नलिंग प्रोटीन को देगा. Okay, now here we will have a common platform. We cannot take any example here in discussion. Okay, so in a generalized pathway hai, so we will generally talk about it, that here it is a set of proteins which are called a cell signaling protein. Various cell signaling protein in a series will start transmitting the signal. So if you look at the cursor, you can see that the second messenger binds with this fellow, this protein, which is a cell signaling protein, and it passes the signal further to another cell signaling protein at 7, which further transmits it into another cell signaling protein, which further transmits it to a step 8, which is one of the targets, target component or target protein, which can either enter inside the nucleus or can directly act upon certain ion channels or transporters or cell membrane or any other aspects of the cell, depending upon what function you want to attain through this cell signaling system. So this is how it works, and these are all cell signaling protein which works here. Now, what is the feature of the cell signaling protein that need to be understood well? Okay, but before I move further with these kind of protein, what is they and how do they work? Let me take you people to the second route, because again there is a commonness between the route. पहला तो ये समझो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर जो बाहर है उसको सिर्फ रिसेप्टर को बाइंड करना है. रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, एंड रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद द रिसेप्टर उसको पास करेगा इफेक्टर के पास. ओके, इन द फर्स्ट रूट इफेक्टर से फिर वो सेकंड मैसेंजर बनाएगा, सेकंड मैसेंजर से फिर वो आगे सेल सिग्नलिंग प्रोटीन को देगा. बस इतना चीज ध्यान रखो, इफेक्टर से लेके सेकंड मैसेंजर तक. ओके, दैट इज वन रूट. नाउ कम टू सेकंड रूट. सेकंड रूट में क्या होता है? देयर इज नो एंजाइम. So if you see, there are parallelly two diagrams shown. The first part of the scheme is your effector based. Now, second particular method is called as a recruiting station based. It is called as a recruiting station based.
So here इसमें क्या होता है basically, when you have the second messenger, sorry, extracellular molecule, when it binds to the receptor on the extracellular domain, the receptor gets activated because of conformational change. ये तो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, so वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि चेंज कहाँ से होने वाला है, नंबर 3 से, स्टेप नंबर 3 से चेंज आएगा. तो 1 and 2 इज द सेम. तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है. एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर बाहर है, receptor binds to the extracellular messenger, receptor being a protein undergoes conformational change, cytoplasmic domain gets activated. Once it is activated, okay, now here if you can see, there is something called as a P phosphate group that is attached to the receptor. If you can see, okay, a phosphate group is attached to the receptor, because ये receptors थोड़ा हटके होते हैं काम में. ये receptors के पास kinase activity होता है, जिसके through it can add a phosphate group, and when a phosphate group is added, it becomes active. So this was not the case in the first type. In the first type क्या था, cytoplasmic domain activate हुआ, सीधा enzyme को activate किया. But ये केस में ऐसा नहीं है. cytoplasmic domain activate हुआ, और cytoplasmic domain activate होना मतलब क्या, उसके पास phosphate group आया है. तो phosphate group आने की वजह से वो activate हो गया है, और activate होने की वजह से now there are other cell signaling protein which can identify this active part of the receptor. मतलब जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन जिसके पास अभी P है, वो P को, वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है. कौन? द सेल सिग्नलिंग प्रोटीन, दे कैन रिकॉग्नाइज इट. देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है. पहला केस में यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं था, वहां पे सीधा साइटोप्लाज्मिक डोमेन एंजाइम के साथ इंटरैक्ट किया. और अभी के केस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ओके, इट इज नॉट इंटरैक्टिंग, रादर इट इज itself getting activated. And once it is activated, there is another cell signaling protein which is present in the cell which can detect this and identify this, recognize this. Once they recognize this, they will go and bind to this cytoplasmic domain. So if you see here, okay, there is a protein which can go and bind to this particular P, okay, to the P region. Okay, so once it binds to the P region, this fellow becomes now active. This cell signaling protein now becomes active. तो पहला सेल सिग्नलिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, बट वो इनएक्टिव था. बट जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे जब फॉस्फेट मिला, तो ये फेलो उसको डिटेक्ट किया. कौन? सेल सिग्नलिंग प्रोटीन ने उसको डिटेक्ट किया, एंड इट गोज एंड बाइंड्स टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ दैट रिसेप्टर. And when it binds to that cytoplasmic domain of the receptor, it now receives the signal from the receptor and it itself gets activated. So now this cell signaling protein is active because it has paired itself with the cytoplasmic domain of the receptor. Now since this fellow is active, now it can transmit signal further to other cell signaling protein like in the first route. तो जैसे फर्स्ट रूट में हो रहा है, अभी आगे सब सेम होगा जैसे फर्स्ट रूट में चल रहा है. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, सिर्फ स्टेप नंबर 3 to 5, ओके, 3 to 5 और या फिर 3 to 6 बोला जा सकता है, वहां पे ही सब डिफरेंसेस आ रहा है. जहाँ पे क्या है, पहले वाले केस में एंजाइम के साथ इंटरेक्ट किया, सेकंड वाले केस में देयर इज नो इंटरेक्शन विद द एंजाइम, रादर इट इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद सेल signaling protein, because the cell signaling protein is able to recognize the activated cytoplasmic domain. Okay, I hope all of you are understanding. Just one of you can unmute and just let me know whether you are able to understand, so that I can proceed further. So can you explain it once again? Entire process? No, the second part, the Hello? recruiting one. Okay, recruiting one. Okay, listen carefully. I'll try to give a glimpse again, entire thing full. Just all of you be attentive. Okay, please be attentive. So what I was telling, if one cell wants to communicate a message to another cell, okay, so what does the first cell do? It will produce a cell signaling molecule which is called as the extracellular messenger, also called as ligand, also called as first messenger, because that is the very first molecule which will give the signal. That is why it is called as first messenger. वो रिलीज किया जाता है कहाँ पे, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में रिलीज किया जाता है. Then second cell should obviously have a receptor, then only it can get the signal. So there is a receptor present on the second cell which will now interact with the first messenger, that is the extracellular messenger. उसके साथ वो interact करेगा.
Now this receptor has two domains. The receptor has an extracellular domain and an intracellular domain. Intracellular domain is also called as cytoplasmic domain. तो extracellular domain में क्या होगा, मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, कौन सा एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर उसको बाइंड करेगा. जब वो बाइंड करेगा तो एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर बाइंड करने पर रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा. क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है. कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने पे क्या होता है, उसका एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन पे मॉलिक्यूल बाइंड किया, जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेट हुआ. तो इनिशियली साइटोप्लाज्मिक डोमेन इनएक्टिव था, but when this molecule binds to that extracellular, I mean to the receptor now becomes active and its cytoplasmic domain is now active. Okay, so this much is in the first step. First step मतलब basically in the first route. आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट रूट में इतना समझो. सेकेंड रूट में भी सेम मैनर में होता है. एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर आता है, रिसेप्टर को बाइंड करता है, रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी एक्टिवेट होता है. बट डिफरेंस स्लाइटली क्या है कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन यहाँ पे जो एक्टिवेट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास काइनेज का एक्टिविटी है. काइनेज एंजाइम इज दोज एंजाइम व्हिच कैन ऐड फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने वाले एंजाइम को हम काइनेज बोलते हैं और फॉस्फेट ग्रुप निकालने वाले एंजाइम को हम फॉस्फेटेज बोलते हैं. तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्टिविटी है, काइनेज है, जिसके वजह से उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन में पी आ जाता है. तो नाउ इट इज एक्टिव. पी आने पे एक्टिव है, पी नहीं है तो इनएक्टिव है. तो इतना क्लियर है. अभी दो रूट मैंने बोला. पहला रूट में क्या हो रहा है, जब पहला रूट में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन जब एक्टिवेट होता है, इट इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग अ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट नियर बाय एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्टर. जब वो एंजाइम से बाइंड करता है, इंटरैक्ट करता है, तो सिग्नल इज रिलाइड टू द इफेक्टर. इट इज पास्ड ऑन टू द इफेक्टर. Effector then what does it do? Effector then acts on the substrate and converts it into something called as a second messenger, which is a product. And the second messenger is then going to interact with cell signaling proteins in a series to ultimately reach the target site. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ ध्यान रखना है, इफेक्टर से लेके सेकेंड मैसेंजर बनाने तक और सेकेंड मैसेंजर का बाइंडिंग होना सेल सिग्नलिंग प्रोटीन तक. वही एक चेंज है जो जिस चेंज की वजह से हम लोग ने दो रूट बनाया गया है. तो एक रूट ये है. सेकेंड रूट में मैंने क्या बोला कि रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है, क्योंकि उसके पास काइनेज एक्टिविटी है तो उसको फॉस्फेट मिल जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है. वो जब वो एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, कोई इफेक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली कौन है, सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है. तो सेल सिग्नलिंग प्रोटीन डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एफिनिटी है. किसके लिए, रिसेप्टर के लिए. रिसेप्टर का कौन सा एंड के लिए, साइटोप्लाज्मिक एंड के लिए. तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए किसके पास एफिनिटी है, सेल सिग्नलिंग प्रोटीन के पास एफिनिटी है. बट वो बाइंड कब करेगा, जब फॉस्फेट ग्रुप साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे रहेगा. और साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे फॉस्फेट कब रहेगा, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा. रिसेप्टर कब एक्टिवेट होगा, जब एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर उसको बाइंड होगा. उल्टा चल रहा हूं मैं. तो एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर आया, रिसेप्टर को बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे फॉस्फेट आया, जिसके वजह से साइटोप्लाज्मिक डोमेन अभी एक्टिवेट हो गया. अब जाके तुम्हारा सेल सिग्नलिंग प्रोटीन डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको जाके बाइंड करेगा. ठीक है. तो नाउ दिस सेल सिग्नलिंग प्रोटीन बाइंड्स टू द टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ योर रिसेप्टर. तो ये अभी एक्टिवेट हो गया, ये सेल सिग्नलिंग प्रोटीन अभी एक्टिवेट हो गया. अब ये सेल सिग्नलिंग प्रोटीन सिग्नल को आगे सीरीज में पास करेगा जैसे फर्स्ट रूट में हो रहा है. इसीलिए इधर नंबर 3 से नंबर 6 तक ओके डिफरेंसेस दिया गया है दोनों केस में. बट 6 से लेके 9 तक जो भी प्रोसेस है वो काफी सिमिलर है दोनों रूट्स में. तो स्टेप नंबर 2 इज सिमिलर इन बोथ द रूट्स. Step number 7 till step number 9 is also similar in both routes. The only difference lies between 3 to 6. 3 to 6 में फर्स्ट रूट में क्या डिफरेंस है, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, एंजाइम से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट को हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं जो आगे सिग्नल को रिलाई करेगा, पास करेगा. और सेकंड रूट में क्या डिफरेंस था, सेकंड रूट में डायरेक्टली रिक्रूटिंग स्टेशन बनता है. रिक्रूटिंग स्टेशन इसीलिए बोला गया है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डोमेन कोई एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर रहा है. इनफैक्ट वो खुद ही स्टेशन बन रहा है. स्टेशन बनना मतलब क्या, वहां पे ही दूसरा प्रोटीन उसके पास आके बाइंड कर रहा है. जबकि अपना पहला वाला रूट में देखो, पहला वाला रूट में कोई उसको आके बाइंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एंजाइम बाजू में है, सिर्फ उसको सिग्नल दे रहा है और एंजाइम बाकी का काम संभाल रहा है. बट सेकेंड केस में ऐसा नहीं है. इफ यू सी द साइटोप्लाज्मिक डोमेन विल एक्ट एज अ स्टेशन टू विच अनदर सेल सिग्नलिंग प्रोटीन विल कम एंड बाइंड
and they will then further transmit the signal. ठीक है? So I believe now at least you are clear with the two routes. I mean, before I go from 7 to 9, 7 to 9 is again going to be same for both the routes. But difference कहाँ पे समझ में आया दोनों रूट में? दोनों रूट का डिफरेंस सिर्फ स्टेप नंबर 3 से लेके स्टेप नंबर 6 तक है. That is the only difference. बाकी सब सेम है. Okay? So I believe all of you have got it well. So shall I move further? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. So you all have understood. Good. So let's move further, okay, to step number 7 till step number 9. Now, step number 7 से लेके step number 9 तक, I am not going to take names of any specific examples here. I'll generally call it a cell signaling protein. Okay, so they are intracellular cell signaling protein. Intracellular इसीलिए क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए intracellular. सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसीलिए क्योंकि वो सिग्नल्स को आगे पास कर रहा है. तो इंट्रासेल्युलर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से ये सारे जो भी स्मॉल स्मॉल ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है, ये सब क्या है? सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इंट्रासेल्युलर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. अब इसके पास क्या खासियत है? व्हाट इज द न्यू स्पेशल फीचर्स दैट दीस फेलोज पोजेस, ओके, बिकॉज ऑफ व्हिच दे कैन हेल्प ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फर्दर. So let's come to the characteristic feature of these cell signaling protein. These cell signaling proteins have some enzymatic capacity, enzyme capability, which is called as kinase and phosphatase. Okay, तो जो थोड़ी देर पहले मैंने रिसेप्टर के केस में बोला सेकेंड रूट में, वही जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बाकी सेल सिग्नलिंग प्रोटीन्स के पास भी होता है. तो बाकी जो सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है, या तो उसके पास काइनेस का एक्टिविटी होगा या फिर उसके पास फॉस्फेटेस का एक्टिविटी होगा. अब समझो दोनों एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है. काइनेस बाय द नेम, काइनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप, while phosphatase is an enzyme which is responsible for removing a phosphate group. तो एक का काम है ऐड करना, दूसरे का काम है रिमूव करना. ओके, तो ये डिपेंड करता है कि सिग्नल को आगे पास करने के लिए क्या फॉस्फेट लगेगा या नहीं लगेगा. कुछ केसेस में फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. ऐसे केस में सेल सिग्नलिंग प्रोटीन हैविंग काइनेस एक्टिविटी विल डू द वर्क. दूसरे केसेस में फॉस्फेट्स को निकालना पड़ता है, तब जाके आगे सेल सिग्नलिंग होता है. ऐसे केस में फॉस्फेटेसिस विल टेक ओवर द इफेक्ट. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. काइनेसिस विल ऐड फॉस्फेट. तो एग्जांपल्स वेयर और एनी पर्टिकुलर pathway, cell signaling pathway, where you should require a phosphate group being added to the protein so that the cell signaling can occur. In such cases, kinases will help in the process. While in those cases where some phosphates have to be removed from the protein so that they can do the essential work of cell signaling, in those cases phosphatases can help removal of that phosphate. Okay, so indirectly to state that certain cases में phosphate add करने से active होता है, certain cases में phosphate निकालने से उसका activation होता है. इनएक्टिवेशन भी सेम है. किसी केस में फॉस्फेट डालने से इनएक्टिवेशन हो सकता है, किसी केस में फॉस्फेट को डालने से उसका इनएक्टिवेशन हो सकता है. तो बोथ वे इट इज पॉसिबल. तो सेल्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग प्रोटीन, ईच हैविंग डिफरेंट स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी मतलब हर एंजाइम एक एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है और किसी के साथ नहीं करेगा. ओके, so there are different number of kinases and phosphatases present inside the cell. They do this work together, okay, and they are very specific for their action. जैसे अगर मैं बोलूँ टायरोसिन काइनेज, ओके, टायरोसिन काइनेज बोलेगा तो ये वो टाइप का काइनेसिस है जो फॉस्फेट ग्रुप टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड को देगा. You all know that proteins are made up of amino acids, okay, so proteins have got different types of amino acids to it. So one of the amino acid tyrosine, अगर उसको मैंने फॉस्फेट ग्रुप लगाया तो वो फॉस्फेट ग्रुप लगाने वाला जो एंजाइम है उसको मैं बोलूंगा टायरोसिन काइनेज. ओके, सेम वे देयर आर काइनेसेस व्हिच कैन ऐड फॉस्फेट टू सेरीन ग्रुप और थ्रियोनिन ग्रुप. तो सेरीन अमीनो एसिड को डाला जा सकता है फॉस्फेट, थ्रियोनिन को फॉस्फेट चढ़ाया जा सकता है, या फिर टायरोसिन को डाला जा सकता है. थ्रियोनिन एंड सेरीन थोड़े कम लेवल्स पे यूज किया जाता है, जबकि टायरोसिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग. तो बहुत एक प्रोटीन्स के पास टायरोसिन होता है एंड बहुत एक प्रोटीन्स के जो काइनेज एक्टिविटी होता है उसके पास टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करने का कैपेबिलिटी होता है.
So many cell signaling proteins, okay, which they are nothing but they are kinases or phosphatases. And kinases can be what kind of kinases? They can be serine kinases, threonine kinases, or tyrosine kinases. ओके तो ये सारा अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला फर्स्ट रूट में सेकंड मैसेंजर आया, उसने सेल सिग्नलिंग प्रोटीन को बाइंड किया, ठीक है, उधर तक तो ठीक है सब, तुमको समझ में आया। बट लेट्स एज्यूम कि ये सेकंड मैसेंजर बाइंड करने के बाद ये सेल सिग्नलिंग प्रोटीन को क्या हुआ, तो ये सेल सिग्नलिंग प्रोटीन के पास क्या है, काइनेज एक्टिविटी है, जो कि इनएक्टिव था, इनिशियली क्या था, इनएक्टिव था। बट जब सेकेंड मैसेंजर बाइंड किया सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, तो क्या हुआ, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो काइनेज एक्टिविटी है वो अभी एक्टिव हो गया। जब ये काइनेज एक्टिविटी एक्टिव हो गया तो इसने क्या किया, इसने दूसरा एक सबस्ट्रेट को अटैक किया और उसको फॉस्फेट ग्रुप चढ़ाया, क्योंकि उसका काम तो काइनेज का काम है। सो सिंस इट हैज गॉट काइनेज एक्टिविटी, उसका काम क्या है, फॉस्फोरिलेट करना है, तो इट विल फॉस्फोरिलेट अदर प्रोटीन। नाउ दैट अदर प्रोटीन इज आल्सो अ सेल सिग्नलिंग प्रोटीन। इट वाज इनएक्टिव क्योंकि उसके पास फॉस्फेट नहीं था, बट जब ये फेलो ने उसके काइनेज एक्टिविटी के बदौलत जब इसको फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो ये प्रोटीन अभी क्या हो गया, एक्टिव बन गया, ठीक है। अब ये प्रोटीन एक्टिव बनना मतलब क्या है, इसके पास भी या तो काइनेज है या तो फॉस्फेटेज एक्टिविटी, तो ये भी अभी आगे के अगला सबस्ट्रेट को अटैक करेगा, या तो उसको फॉस्फेट ग्रुप देगा या तो उसका फॉस्फेट ग्रुप निकालेगा, जिसके वजह से या तो वो एक्टिव होगा या तो वो इनएक्टिव होगा। अगर एक्टिव होगा तो वो आगे जाके अगला प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। सो दिस सीरीज में जो हो रहा है, ये सीरीज में जो भी हो रहा है, ये सब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। और वो एंजाइम एक्टिविटी कौन सा है, या तो काइनेज या तो फॉस्फेटेज। तो हर सेल सिग्नलिंग प्रोटीन जो आगे है ये सेकेंड मैसेंजर के बाद, ये सब में या तो काइनेज का एक्टिविटी होता है या तो फॉस्फेटेज का होता है। वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता, बट एक बार सेकेंड मैसेंजर से उसको सिग्नल मिल गया तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होना मतलब क्या, उसका एंजाइम एक्टिविटी चालू हो जाता है। जब एंजाइम एक्टिविटी चालू होता है वो सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करेगा, सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इज नथिंग बट अनदर सेल सिग्नलिंग प्रोटीन which is now going to be active and which can pass on the signal further. This way the signal is relayed from the extracellular space down through the plasma membrane into the cell interior. Okay, so this way the signals are relayed across the cell and it ultimately reaches the target cell or the target protein. Okay, now target protein can be anything. Let's take up an example. Okay, in the very first day of my lecture I told you all that if you subject bacteria to different kind of metal concentrations, heavy metal concentration, the bacteria can undergo toxicity. Okay, and when they undergo toxicity, they can generate something called as metallothionein protein for helping their survival. In that case, I told you that these metals can act as extracellular messenger. They will bind to the receptor of the bacterial membrane, and the bacterial membrane will pass on the signal further in the same manner as we studied just now as a signal transduction cascade. And it finally reaches where, into the nucleoid of the bacteria, the DNA, where a particular transcription factor gets activated. And that transcription factor turns on the metallothionein gene transcription, due to which metallothioneins are now produced in good quantities, which will help the cell to survive in that metal toxicity. Such kind of a process is achieved because of the current generalized pathway that I mentioned to you. This is the scheme for that. This is how it works. So just look at number 8. Number 8 is nothing but the target protein. Just assume that the target protein is the final say protein which has to remain activated. Once this fellow is activated, it can cross the nucleus, it can go into the nucleus, it can turn on a transcription factor. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को वो एक्टिवेट करेगा। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो सारे स्पेसिफिक होते हैं, वो सारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा सारा जीन्स का, वो सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन चालू करेगा। अब कौन सा स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड सिग्नल करेगा कि कौन सा सिग्नल आता है। अगर मेटल का सिग्नल आया तो मेटालोथायोनिन बनाएगा वो, गेटिंग मी। अगर अमाइलेज स्टार्च है प्रेजेंट तो अमाइलेज बनवाएगा वो, जैसे इंड्यूसिबल एंजाइम्स होता है। यू ऑल हैव लर्नड अबाउट लैकोपेरॉन, इट इज इंड्यूसिबल। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली यू हैव एलोलैक्टोज बीइंग फॉर्म्ड, इट इंटरैक्ट्स विद द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड देयरबाय इट कम्स इनसाइड एंड देन द लैकोपेरॉन गेट्स एक्टिवेटेड। Okay, so similar manner it is a series of responses that is seen. It's a series of cell signaling systems that is working. Ultimately it reaches the target site, and the target site can be anything.
it can be gene transcription as I mentioned just now, or it can be even survival. Survival matlab, let's assume that the environmental condition is harsh, okay, it is not in the favor of the cells to survive. In those cases, for helping the survival of those particular cells, these signals can help them. Or it can be protein synthesis. जैसे मैंने बोला, if you know a substrate is present outside, okay, in that particular case, okay, you can have the generation of certain enzymes, and that enzymes will make sure that the particular substrate is consumed by the cell for making energy. So that way it can do. Then movement, cell movement can also be facilitated by means of cell signaling. Jैसे you might have learned about chemotaxis. Chemotaxis matlab wherein it is either moving towards the signal or towards the chemical or away from the chemical. Okay, there is repellence and attraction towards chemicals by different cells. That is also because of a cell signaling mechanism. Cell death, that is nothing but programmed cell death or suicide, apoptosis. That also can be because of cell signaling. Metabolic changes can be because of cell signaling. Okay, whether to digest a particular protein, whether to go ahead with a carbohydrate, pathway, whether to have some HMP shunt pathway or anything. That also can be mediated to some extent because of cell signaling. Okay, so this is the series of step number 7 to 9 is all about cell signaling protein having kinases and phosphatases playing a big role here, and that is going to be same in both the routes. So in the another route जहाँ पे recruiting station था वहाँ पे भी same ही होगा. Recruiting station once it is activated, वहाँ पे एक cell signaling protein directly उसको recognize करेगा, उसको bind करेगा. जब वो active होगा, वो आगे के cell signaling protein को activate करेगा by means of kinase and phosphatase. So the mechanism is the same in both the routes. Difference सिर्फ कहाँ पे है? 3 to 6 जो stages है वहाँ पे ही difference है. बाकी आगे का stages it is all because of cell signaling protein which is having kinase or phosphatase activity. Okay, so this way the signal is ultimately reaching the target site, that is the target protein, and the target protein further helps in either to help in transcription or survival or protein synthesis or movement or cell death or metabolic changes. These are few examples. There can be many more different kind of responses. There can be inflammation, there can be pain, okay, or there can be relaxation, contraction. Any kind of mechanisms can happen because of cell signaling.